Welcome to Unofficial Electrical Technology. UET, a step towards great success. Join our Telegram channel for more discussion. Otherwise, scan the QR code and directly to join our Telegram channel. Follow us on Twitter. Those who are new to our channel, please subscribe our channel and hit the bell icon for latest updates and lectures. Hi all. So in this session, we are going to discuss about your principle of operation of your DC generator. Okay. So please write down. Working principle or principle of operation of your DC generator. So please write down. Working principle of DC machine लिखि परिवो जनरेटर भी लिखो एका कथा के असुविधा नहीं जनरेटर लिखि दियो ये जनरेटर पढुचो जनरेटर लिखो मोटर टिके उल्टा आसीबो हला डीसी जनरेटर ओके सो बेसिकली सुनो मु इंग्लिश टू इंग्लिश पढेबी हला काइना एठी हिंदी पिला माने अछंते हला तमन उटे मु सिंपल इंग्लिश कहबी ओके सो मु जानि को माने को प्रॉब्लम हबोनी हला तथापि मु ओडिया रे सब डिस्कशन करैबी हला सो डोंट वरी एट ऑल so basically DC generator working principle is based on your dynamical induced EMF okay dynamical induced EMF so what is that मु सेटा तुम मानकू पढ़ाई डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ तुम मानकू सीएंट रे पढ़ाई तो जो माने पढ़िनो से माने सुनो ओके व्हाट डू यू मीन बाय योर डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इट इज नथिंग बट your Faraday's laws of electromagnetic induction okay so let us discuss what that law is all about okay so please write down Faraday's laws of electromagnetic induction first okay ସେମାନେ ପଢିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଓକେ ସିଏଣ୍ଟରେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ପଢେଇଛି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ବେସିକ ଦେଖିଦେଇ ଯିବା ଆଉ ଓକେ laws of electromagnetic induction electromagnetic induction okay so it is states that whenever the flux linking with a conductor changes an electromotive force that means your EMF is set off in that conductor yes or no please one person unmute yourself and tell me yes or no mu jota kahili seta ठीक na bol yes or no okay so please write down this one okay please write down here it states that लिखि दियो नुआ खाता जे बनेइचो नोट्स बनाओ सब हला मु जेती पढौछ भी नोट्स बनै दो तापर मु जोटा नोट्स देबी सेउडा भी लिखि नबो हला whenever the flux linking with a conductor शुभ प्रकाश तुमर दुई तीन जन पिला आसी ना बोधे
ତମ ସେ Yes, ସୋନାଲି sir. ସେମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ ସବୁ? ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡକାଅ, ଫୋନ କରିକି ଡକାଅ। ଏ Sir, କ୍ଲାସ ମିଳିବନି sir, ଜମା। 2 ଜଣ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ହଁ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କାହାନ୍ତି ସେମାନେ? ଆସିଛନ୍ତି ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସାର୍ ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାହେବ ମହାନ୍ତି, ସିଏ ଜଣେ ଆମ କଲେଜ ପିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସାର୍। ନା ସୋନାଲି ଆଉ ସେ କବିତା ସେ 2 ଜଣ ଲେଡିସ୍ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ତ ଜଏନ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନା। ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଦିଅ ଇମିଡିଏଟଲି, ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଏ କ୍ଲାସ ମିଳିବନି ବାବା ତମମାନଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର। So an EMF, that is your electromotive force, is set off hmm, set off in that conductor. এটা হচ্ছে ସବୁଠୁ short sentence ହେଲା, ଆଠୁ short sentence କିଛି ନାହିଁ। Okay, so it means, okay, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, it states that whenever the flux linking with a conductor changes, an EMF, that is your electromotive force, is set off in that conductor. That means whenever a change in flux is associated with a conductor, who is that? Just a minute. Okay. Okay. It means that whenever a change in flux is associated with a conductor, we will get EMF, and that EMF is nothing but your dynamically induced EMF. बुझियला ना बुझियलानी? बुझियला ना बुझियलानी? Whenever a change in flux is associated with a conductor, we will get some EMF, yes or no? And that EMF is nothing but your dynamically induced EMF, yes or no? बुझियला ना बुझियलानी? जो EMF टा हमें पाइबा सेटा होची तमरो डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF. Yes or no? CNT रे पढ़ाई थी. Yes or no? Please type in the chat box or unmute yourself and tell me. Yes or no? Yes sir. Okay. Okay. Yes sir. तो हाँ समस्त अनम्यूट है कि कही पारो किसी असुविधा नहीं. गूगल मीट रे एटा तो मेरिट तुम मानक पाइका. जहाँ तुम डाउट हबो सेठी इंस्टेंटली अनम्यूट है कि पचारि पारिबो. आ टाइप कले चैट बॉक्स रे मु भी एते देखि पाउनी. ओके, तो अनम्यूट है कि पचारि पारिबो किसी असुविधा नहीं. So your dynamically induced EMF is nothing but, please write down, dynamically induced EMF is nothing but your E is equal to d phi by dt. Yes or no? According to your Faraday's laws. Yes or no? So now a question is arises here for your future purpose only. Okay, for your future purpose, this question is your future purpose only. The question is, when I will get change in a flux, there are two options only. What are there? There are two options. कौन कौन से दिटा जानिचो? One, number one रहउची तम मानकर, I should have a relative motion between a conductor and a flux. Yes or no? पढ़ेइतिली CNT रे एटा मु पढ़ेइतिली. कंडक्टर को स्टेशनरी रखी कि आउ काकू बुलेबी मु मूविंग करेबी कहितिली. कार मने अछि को मते? ना मने नाही को? मने अछि ना मने नाही को? अरे अछि ना नाही? के किछि कहबोनी. ई तो असुविधा हो. ओके मु कहि दूची. ओके मु कहि दूची. ओके, I should have a relative motion between a conductor and a flux. So this is a very important statement. Okay, what is required for DC generator to induce EMF in relative motion between conductor and flux? Okay, so relative motion between conductor and flux. Okay, so please write down, this is the point. Okay, तुम एवडा जो पॉइंट उडा मु कहूची सेवडा लिखि दियो, तुम नोट्स मिलला बेले तुम मानको मिल जिवो पर्टफोलियो हैला. ओडा लिखि दियो, relative motion between your conductor and
flux. Okay. So the relative motion can be achieved in two ways. केमिति से achieved होबो ता पई का दीटा ways अछि कोन कोन ना first one is nothing but your please write down. First one, we will keep the flux stationary and conductor moving, and second case we will keep conductor stationary and flux moving. Yes or no? एटा मु CNT रे कहिथिल ना नाही. Yes or no? Already I will told earlierly in your CNT class. Yes or no? कहिथिली जोटी हमको magnetic circuit पढैथिल. Yes or no? Yes. So please write down this one. Okay, in the first case please write down, we will keep flux stationary, that means flux constant. सेतेबेले होची flux constant. Okay, flux stationary and conductor is moving. Okay, conductor is moving. And second case is nothing but your, we will keep तर उल्टा टा खाली, we will keep conductor is stationary, we will keep conductor stationary, just a minute, stationary and your flux is moving. Okay, एति बाट अपन तो क्लियर. एटा होची दीटा वे. Okay, for your relative motion purpose. Okay, so since we are studying DC generator, flux is required to produce a motion or EMF induced in case of your DC generator will be generated from electromagnet. Okay, electromagnet as a effect of your DC current. Yes or no? So now what do you mean by your electromagnet? Please tell me. Anybody, please tell me, what do you mean by your electromagnet? Please tell me. बहुत सारा मु पढ़ाई के आसी सीएनटी रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माने कोन मते के कहि परिबो. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. सत्य प्रभु तो कि कुओ किछ असुविधा नै. मु तुमको गाली देबिनी, तुमको किछ देबिनी. मु जानि छी जो मन जानि छियो से माने कहि परिबो. जो मन जानि न जानिबो एठी किछ असुविधा नै. मु जणैबी किंतु कुओ मते अनम्यूट कि कुओ निज इच्छा रे कुओ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माने कोन? इलेक्ट्रोमैग्नेट माने कोन? मैग्नेट तो जानि छियो किंतु इलेक्ट्रोमैग्नेट माने कोन ये कहि परिबो कुओ. सर कोई कुओ कुओ. सर जो सोलेनोइड को यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा जाय सेटा. व्हाट इज सोलेनोइड? गोटे सर गोटे कंडक्टिंग लुहा गोटे कंडक्टर. ना 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 ना. हेलो सर. सर गोटे सॉफ्ट मेटल वन बाय वन से पिला जने कहउछन टिके रहि जाओ. ई सोमनाथ बोधे आई थिंक को कोन कहउछो व्हाट डू मीन बाय सोलेनोइड? सर सही गोटे कथा कहउछो जे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड गोटे लुहा तार तार आ बाबा कुह ना बिंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट आ तार कुह निसला वायर कुह हला. आउ के कोन कहउछले आउ के कोन कहउछलो कुह सर. कुह सर सोलेनॉइड उसको बोलते हैं सर जब एक जस्ट ए मिनट ओनली. सौरभ बेहरा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. ना सॉरी प्लीज म्यूट योरसेल्फ. म्यूट योरसेल्फ. हेलो. हाँ म्यूट करो तमे म्यूट हो जाओ से कहि सारन. हां शुभम शर्मा को कौन कहछो सर? सर सोलेनॉइड का मतलब ये होता है सर जब एक मेटल पीस में सर जब हम लोग कंडक्टर को कॉइल की तरह लपेट रोल करते हैं सर, और जब उसमें से सर जब हम लोग इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाते हैं तो सर तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और वो सर इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण होता है सर. तो इसलिए हम लोग उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं सर. क्या बात है, बहुत बढ़िया एक्सीलेंट. ओके सौरभ बेहरा प्लीज टेल मी. प्लीज शुभम शर्मा प्लीज म्यूट योरसेल्फ. हां को सौरभ बेहरा को सर जेते गोटे मेटल आमे जेते करेंट पास करनी सेटा माने
ମାନେ करेंट ଇଏ केमिति ମାନେ पास करिवो ना ना करेंट केमिति पास करिवो सेतरे हमें किसी ना सेतरे वाइंडिंग कॉले से करेंट पास करिवो जो पास ହଁ करिवो ସାର୍ गोटे कॉइल बनायो पड़िवो ना ता ସେମାନେ भीतर ये ୱାୟାରକୁ सुनो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ୱାୟାରଟେ ୱାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିନା ତା ଯଦି କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରନ୍ତି ସେଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଭଳିଆ ମାନେ हाँ ଆକ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ कौच अधा हाँ अधा अधा कौच ओके सुन ओके ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं सुन ମୁଁ କହିଛି ସେଟା ହେଲା ମୁଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଚାପ୍ଟର ରେ ପଢେଇଛି ହେଲା ତମେ ସେଟା ଯେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଶୁଣିଥିବ ସେ ମନେ ରଖିଥିବ ପୁରା ଆରାମସେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ଲିଜ ମ୍ୟୁଟ ୟୋରସେଲ୍ଫ ଅଲ୍ ଅଫ ୟୁ ଓକେ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ସପୋଜ you will have a conductor okay suppose you will have a conductor wound over a magnetic material okay wound over a magnetic material and that conductor is carrying a current that current is responsible for the production of the flux around it okay around it that is given by your right hand thumb rule yes or no yes or no ସେଇ ଯୋଉଟା ତମେ ଯୋଉଟା ସଲେନଏଡ କହିଲ ସେଇଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ସେଟା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥମ୍ବ ରୁଲ ଉପରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ନା ନାହିଁ yes or no yes yes or no yes ସାର୍ ଓକେ ସୋ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି suppose you will have a conductor wound over a magnetic material and that conductor is carrying a current that current is responsible for your production of flux around it that is given by your right hand thumb rule okay so what is that or what is states na right hand thumb rule kon kohuchi na hold a current carrying conductor such a way that outstretched thumb will determine the direction of current then the call finger will represent the magnetic flux associated with it yes or no so to produce a magnetic flux here we are going to use the DC supply or use a DC supply that will give you DC current and DC current will give you a flux which will remain constant with respect to time yes or no yes or no ମୁଁ ଯେତିକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲି ବୁଝି ପାରିଲ ନା କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ପ୍ଲିଜ ଅନମ୍ୟୁଟ ୟୁରସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଟେଲ୍ ମି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି କୁହ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚେସ ରେ ପଢୁଛ ତମମାନଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି ତମମାନେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯଦି କାହାର ଡାଉଟ ହଉଛି ମତେ ପଚାର ମୁଁ ସିମ୍ପଲି କହୁଛି ମତେ ପଚାର ମୁଁ ଓଡିଆରେ ବି କହିବି ଆଉ ତମମାନେ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ନା ଯେ ମୁଁ ସବୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଓଡିଆରେ କହିବି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ବାବା ତମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଇଂଲିଶରେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚେସ ରେ ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଯାକ ଭଲ ପିଲା ଏମିତି ମାନେ ମାନେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ପିଲା ଆସିକି ଜଏନ ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ଯାକ ଭଲ ପିଲା ବୋଲି ଏଠି ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି ଓକେ ସୋ ପ୍ଲିଜ ଟେଲ୍ ମି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି ଏଥିରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥମ୍ବ ରୁଲ ପଢେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଲି କଣ ନା ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରିଂ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଧରିବା ମାନେ ଆମର ବାମ ହାତରେ ଆମେ ଧରିବା ବାଁ ହାତରେ ଧରିବା ତାପରେ ଥମ୍ବ ଟା ଆମର କଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିବ କୁହ ନା ଦ ଡିରେକ୍ସନ ଅଫ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ରହିଲା ଯୋଉ କର୍ଲ ଫିଙ୍ଗର ଟା କଣ କରିବ କୁହ ମତେ ନା ଦ କର୍ଲ ଫିଙ୍ଗର will represent the magnetic flux associated with it okay so ଏଇ ଯୋଉଟା ପାଇଲା ବା ଏଇ ଯୋଉଟା ହେଲା ବା ଯୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଲା ଯୋଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫ୍ଲକ୍ସ ଟା ସୋ ଏଟା ଆମର କଣ ଯେହେତୁ ଡିସି ସପ୍ଲାଇ ଯୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଲା yes or no ଡିସି ସପ୍ଲାଇ ହେତୁ ଯୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଲା ସୋ ସେଠି ସେ ଡିସି କରେଣ୍ଟ ବି ଫ୍ଲୋ ହେଲା सो डीसी करंट कौन से जो डीसी करंट द्वारा फ्लो होला से जो फ्लक्स टा क्रिएट होला से फ्लक्स टा कौन होला ना दिस फ्लक्स व्हिच विल रिमेन कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यस और नो बिकॉज़ डीसी करंट भी कांस्टेंट ना नहीं यस और नो yes sir हाँ दैट्स व्हाई ओके गुड सो for a DC generator we are going to adopt a technique where flux is stationary but conductor is moving because flux is produced by a DC supply. Now conductor should be moving. How we can move a conductor? Tell me how we can move a conductor? Okay, ମୁଁ କହିବି କିଛି ଟେନସନ ନିଅନି
शुण है एटा टिके गहिरिया कथा अछि आ भितर पसिबा को पड़िबो हला मु सेत पई डीपली जाउची पूरा हला तो कोन कहली मु आउ थोर कहूची हला सुनो आमे एठी गोटे टेक्निक जो ऐड करबा बा गोटे टेक्निक अडॉप्ट करबा जोटा कि हमरो सेठी फ्लक्स ता स्टेशनरी रहइबो किंतु कंडक्टर ता मूविंग करबो किंतु केमिति सेटा होची हमरो जी मेन जॉब ताकू केमिति मूविंग करबा so how can we move a conductor so that action will be taken with the help of the prime mover okay with the help of the prime mover पुणी एटी आसला prime mover कोन सुनो prime mover ता मु सिंपली फास्ट ओडिया रे कहि दउची तापरे हिंदी पिला मानो पाइका मु इंग्लिश रे कहबे हला मु खाली सिंपल टिके ओडिया रे तम मानो बतै दउची व्हाट डू मीन बाय द प्राइम मोवर हला प्राइम मोवर होची गोटे एक्सटर्नल डिवाइस हला माने एक्सटर्नल डिवाइस कोन फॉर एन एग्जांपल मु जदी कहिबी तम माने आउरी भल भाबरे बुझी परिबो देखिदिबो तम मानको लैब मानो करे जो माने बेसिक इलेक्ट्रिकल जो तो जाहाले भी तुम माने प्रैक्टिकल करिथिबो लैब तो जाहाले अटेंड करथिबो गोटे हो कि दुईटा हो जो माने जे कोन से क्लास तुम अटेंड करथिबो तो लैब भितरु पशु पशु के देखिचो एमिति दिटा सेट रो जो मशीन थिबो रुओ मुडी फिगर कर दउची तुम माने जानि परिबो नल जानि परिबो एमिति दिटा सेट रो मशीन थिबो मते कहिबो खाली हो ना नै मते खाली कहबो यस और नो यस सर देखिचो एमते अछि ना नै मते कहलो यस सर अछि किंतु सेठी तुम मानको जानिया पड़िबो सेटा एक्चुअली कोन हैला सो देखो एटा होची मोर प्राइम मूवर हैला एटा होची मोर प्राइम मूवर ओके माने एटा होची गोटे मोटर हैला एटा गोटे डीसी मोटर ओके आ एटा होची तमरो जनरेटर डीसी जनरेटर हैला एटा होची जनरेटर माने कोन हमकु कंडक्टर को घुरेबा को पड़िबो बा कंडक्टर को रिवोल्यूशन करेबा को पड़िबो तो ताको हम केमिति करि परिबा बाय यूजिंग ए मोटर जदी मोटर ता देखो तमरो एटा को मु लिभे दउची जान परिबो हैला सपोज एटा हो तमरो मोटर रो शाफ्ट एटा हो तमरो मोटर रो शाफ्ट हैला एटा हो तमरो जनरेटर शाफ्ट हैला ए दिटा को जते मु कपुल करि देबी गोटे माने नॉट बोल्ट रे मु भिडी देबी ताकू नै कि माने कोन मु अरेंजमेंट करि देबी सो जेतेबेले मोटर ता घुरिबो जेतेबेले मोटर ता रनिंग करिवो सो मोटर शाफ्ट सहित जेहेतु मोर कनेक्ट हेची जनरेटर शाफ्ट सो जनरेटर शाफ्ट भी घुरिबो जनरेटर शाफ्ट पुनी कहा सहित कनेक्ट हेची तार इंटरनल फिगर जदी मु करि कि देखैबी जनरेटर शाफ्ट तमर आर्मेचर सहित जो कनेक्ट हेतिबो ना नै यस और नो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी यस और नो यस सर हाँ जदि आर्मेचर घुरिबो तले आर्मेचर रे तमरो नंबर ऑफ कंडक्टर ता उंड हेची ना नै जदि नंबर ऑफ कंडक्टर तमरो माने कॉइल हेची बा तमरो वाइंडिंग हेची तले से कंडक्टर ता मूविंग हला ना नै मते कहो यस और नो यस सर अरे यस और नो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी यस और नो बस सो सेटा को क्वाजे प्राइम मूवर और इट इज ए एक्सटर्नल डिवाइस हां किए ओके इट इज ए एक्सटर्नल डिवाइस आउ गोटे तार फॉर एन एग्जांपल जदी भी देबी मु ताको इंग्लिश रे कहला बेले कहती हला सो एति कोची प्राइम मूवर हला प्राइम मूवर कोन इट इज ए एक्सटर्नल डिवाइस फॉर रोटेटिंग माने कोन जहा द्वारा कि हमरो डीसी जनरेटर ता चाली पारिबो माने कोन हमरो कंडक्टर को हमरो मूविंग करेबार अछि जदी एटी देखो जदी मु एटी प्राइम मूवर ता हटै देली हला मोर एटी किछि नाही मोर एटी मोटर नाही मु पुनी ताको कंडक्टर को केमिति मूविंग करे पारिबी तमे जानिछ ऑलरेडी कि डीजल इंजिन माने कोन तमे जानिचो किंतु तम माइंड रे नाही हला हमर जो फंक्शन गुडा हुए कि जो फंक्शन हुए कि बागर गोटे प्रोसेसन हुए जोटा हमें माने डीजे बजे कि जो तम मान जाई नापिक देउ तो सब करूचो सेटा केमिति होची हाउ इट इज पॉसिबल सेटा हमें तो खुंटरू माने पावर नै आसुने सेटी गोटे जनरेटर लागुची नियाती ए सन्नो से जो जनरेटर ता लागुची
सपोज होची एटा मोर गोटे जनरेटर सपोज एटा मोर गोटे जनरेटर हला एटा होची मोर गोटे जनरेटर एटा होची तार शाफ्ट एटा तार शाफ्ट रहला हला एटा होची मोर गोटे जनरेटर सपोज मु एउठू आउटपुट पाई मते एटी आउटपुट रिक्वायर अछि मु जोटी गोल बुलेइली मोर सेटी आउटपुट रिक्वायर्ड अछि मु सेटी लोड सब कनेक्टेड करबी मोर जहा भी होची माने एनी हाउ मु जो जे कोन जो लोड सब कनेक्ट कर तमे जानिचो तमर जो प्रोसेसर ने लागे जो जनरेटर सेटा नॉट योर डीसी जनरेटर और तमे माने कोई परिबन कि सेटा डीसी जनरेटर बोली सेटा डीजल इंजन सेटा डीजल जनरेटर हैला सेठी बहुत कथा अछि पुनी आगु को काहे ना देखो सेठी डीजल जनरेटर काहे कि मु कहली काहे कि ना तमे देखिथिबो तार गोटे एमती गोटे पाना थिबो हैला तार एमती गोटे गोलिया कि हेइथिबो एमती गोटे बाहर थिबो हैला ताकू नै कि कोन करबो से जे इलेक्ट्रिशियन की मिस्त्री आसीबो से पाना टाकू नै कि एई शाफ्ट से कनेक्ट करके से शाफ्ट टाकू घुरेइबो ये सब नो घुरेइबो ना नै कोन नै मत कुओ से शाफ्ट टाकू घुरेइबो हां शाफ्ट टाकू घुरेबा द्वारा सेठी सेठी हम डीजल पडुची डीजल इंजन काहे कहली ना डीजल जेतु पडुची डीजल बाय यूजिंग योर डीजल सेठी तारो कोन सेही मेकानिज्म अछि जे से कौन कला से आर्मेचर टा रोटेट करला आर्मेचर जदी रोटेट करला तमे जानिचो जदी आर्मेचर टा हमर घुरिला तो फील्ड वाइंडिंग अछि नियाते तमर ईएमएफ इंड्यूस करबो जो मशीन स्टार्ट हला जदी मशीन स्टार्ट हला तान तमर ईएमएफ इंड्यूस करबो जदी ईएमएफ इंड्यूस करला ताले हम आउटपुट रे हमर पावर पाइले हम लोड रे कनेक्ट करि परिबा यस और नो दुओ मते यस सर यस सो एबे हमें कहबा कोन हिंदी पिला बाइका ताउके इंग्लिश से कहयो पड़ियो से माने भी तुम भाई माने से माने भी जॉइन हिचन कोन करबा हो तो समस्त तो समान भाव देखिया पड़ियो ओके तो सुनो माइंडफुली लिसन ओके सो योर प्राइम ओवर वी हैव ए एक्सटर्नल डिवाइस व्हिच विल मेक श्योर दैट द कंडक्टर विल रोटेट. So the prime mover examples are the diesel engine. Your prime mover examples are, please write down the example of your prime mover, that is diesel engine. Diesel engine. Okay. Diesel engine. Ki would unmute hoji baba. Saurabh, please mute yourself. Sound subuchi. Okay. Diesel engine or your steam engine. Okay. Or steam turbine bhi koi paro. Okay, steam turbine or your diesel turbine. Okay, or your diesel turbine. Diesel turbine. Okay, so these are the external device which will produce a torque, which will be given to conductor, which is placed inside the magnetic flux in order to have a rotation of a conductor, and that conductor, when it is cutting with the steady magnetic flux, there will be a relative motion between flux and conductor, and Faraday's laws of the electromagnetic induction, EMF, will be induced in that conductor. Yes or no? Is it clear or not? Is it getting or not? Please type in the chat box or unmute yourself for your only for the Hindi language student. Yes sir, yes sir. Okay, okay. So this is all about your prime mover. So since for a single turn, the EMF that we are getting will be very less. For single turn only. For single turn. That means a single turn of coil is your, this is a single turn. Only single turn. Turn. T-U-R-N. Turn. This is called your multi-turn. Okay. This is called your multi-turn. Okay. For a single turn coil, okay. For a single turn coil, the EMF that we are getting here will be very less. So, we form a conductor of several wires, okay, form a conductor of several wires or several coils, ultimately forming a winding, and that winding is called as your armature.
So in the DC machine, the EMF is induced in the armature, and the winding which will be responsible for production of this is called as armature winding. Okay, all of you study in our constructional feature of your DC machine already. Okay, so this is what a basic principle of your DC generator. So now we need to check what is the direction of this EMF induced with respect to the magnetic flux and relative motion between conductor and flux. For that, we are going to apply the Fleming's rule. Fleming's rule. Okay, Fleming's rule. So, for the case of your DC generator, we are going to study here the Fleming's right hand rule, because right hand rule is based on your DC generator only. Okay, so तमन को मु एट भी गोटे सिंपल फार्मूला दोची तमने केमती मने रखि परिबा एक्चुअली को माने रूल को माने कहा पाई का मोटर पाई का किए जनरेटर पाई का की तो माने ओटे डाउट होतो तो ओटे सिंपल बेसिक फंडामेंटल दोची एटा भी बेले बेले ओजेई रे भी क्वेश्चन आसे एक्चुअली व्हाट इज द माने तुम जो डीसी जनरेटर हो कि डीसी मशीन नो ईएमएफ रो डायरेक्शन मापिबा माने जो जानिबा पाई हमें को रूल को यूज करू ठीक है वर्किंग प्रिंसिपल based on your Faraday's laws of electromagnetic induction. किंतु the magnitude and the direction of your EMF ताकू केमिति फाइंड आउट करिबा एमती टाइप रो तमर क्वेश्चन आसे तो देखो मु लिखि दोची जानि परिबो देखो जनरेटर ओके जनरेटर ओके एंड जनरेटर एंड मोटर ओके मोटर ओके एठी लिखि देली फ्लेमिंग सोची कॉमन हैला फ्लेमिंग सोची कॉमन ओके राइट हैंड रूल एठी लिख दूची लेफ्ट हैंड रूल हैला लेफ्ट हैंड रूल ओके सो कोटा कहा पई प्रयोज्य केमि जानिबा देखो पूरा सिंपल फंडा देखो मने रखि परिबो देखो जनरेटर रे केतेटा आर अछि मते कहलो एठी गोटे आर अछि एठी गोटे आर अछि एठी गोटे आर अछि यस और नो जनरेटर रे डीटा आर हैला मोटर रे गोटिया आर हैला तो जनरेटर रे जेतु डीटा आर अछि देखो फ्लेमिंग्स होची कॉमन फ्लेमिंग्स को छाड़ी दियो राइट हैंड रूल जो लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल ले आर एठी गोटे अछि आ गोटे रूल ले आ गोटे आर अछि ता माने दिस इज फॉर योर जनरेटर तमो से आराम से मन रखिबो इंटरव्यू क्वेश्चन एटा डायरेक्टली टाटा पावर रे जो एम का क्वेश्चन पचारियो फॉर योर डिप्लोमा प्रपोज बीटेक प्रपोज नुए एटा होची डिप्लोमा प्रपोज आईटीआई डिप्लोमा प्रपोज ओके देखो मोटर रे जेतु गोटे आर अछि लेफ्ट हैंड रूल ले लेफ्ट रे तो आर नै हैंड रे तो आर नै खाली रूल ले आर अछि तो एठी गोटे आर बस कंबाइन कर दियो फॉर द मोटर प्रपोज इट इज एप्लीकेबल योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बुझियला ना बुझियलानी सिंपल कांसेप्ट एटा माने डायरेक्टली कहबो एमिति जे मन रखि पाउछि भलो जार मन न रहउछि से एमिति मन रखिबो बुझियला ना बुझियलानी भल लागिला ना ट्रिक ता यस सर आउरी आगु को बहुत ट्रिक अछि तमन पई आउर तो बहुत सारा ट्रिक अछि मन रखिया पई ओके ताकू भी सब कुहा हो व्यस्त होनी हेले वेट करी चलो कोन होउछि आगु को देखो हैला ओके भावना कि तुमको आ मु सेमती पढै बोली वर्किंग प्रिंसिपल तुमको आ मु एमती गोटे करि देबी नॉर्थ पोल एमती गोटे जो करि देबी साउथ पोल एठी मु आनी कि गोटे रेक्टेंगुलर एठी थोई देबी आनी कि एठी आजि ब्रश कर देबी एटा को कहि देबी तुम कार्बन ब्रश लागिला एटा ए बी सी डी एमती ना देई देबी ए बी जेतले सेपडु गला डी सी पुणी एपडु कहला एमती मु कहबिनी एटा फॉर योर 10th क्लास प्रपोज एटा 10th क्लास फिजिक्स रे पढिथिबो हैला एससीपी ओके फिजिकल साइंस से पढ़ी है किंतु जेतु डिप्लोमा बीइंग ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट एमती पढ़ा को आउ तुम रिक्वायर ना ओके तुम टे भितर जीव पड़ो ओके सो एबे पढ़ा कौन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल प्लीज राइट डाउन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मु लिखि दउची ता भीतर तुम माने भी लिखि दियो हैला रूल्स टा लिखि सारे तापर मु तुम कहि हैला से रूल्स रे कोन कहूची से हैला फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल
So please write down. Quite लिखियो हला. It states that if ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ନା ଭିଜିବୁଲ ହଉନି କୁହ? यस सर विजिबल ନେଟୱାର୍କ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ନା ବେଳେ ବେଳେ କଟିଯିବ ଯଦି ପୁଣି visible ହଇରାଣ ହଉନି ହବ sir। ମାନେ ହଉନି सर visible हो ना सर बढ़िया तो ଭିଜିବୁଲ ହଉନି चलियो सर ହଁ चलियो माने कौन पूरा सर बढ़िया देखा उसका ओके बढ़िया गुड सो जो मान ଭିଜିବୁଲ ହଉନି ତମମାନଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଥିବ ବାବା ओके कि तुम माने जाइए अनऑफिशियल इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी जोटा प्रेजेंटिंग ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ପିନ୍ କରିଦିଅ ତାହେଲେ ଯାଇ जो ଦେଖାଯିବ ନହେଲେ ଦେଖାଯିବନି ओके तुम पिन न करथिबो पुणी ଦେଖାଯିବନି ସେମିତି ତ ଅନपिन ହେଲେ ବି ଦେଖାଯିବ डायरेक्टली ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ହାତ जो मार ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବନି ପ୍ରୋବ୍ଲେम ହବ so if three fingers of a right hand namely thumb माने जोटा तुम बुढ़ा आंगुली thumb and index finger okay index finger and middle finger मु कहिबी डोंट वरी अबाउट ऑल द रूल्स ओके मु सब ओडिया रे कहिबी टेंशन नहीं लिखि दियो आगे रूल्स टा ओके मिडिल फिंगर आर outstretched so that everyone of them is at right angles just a minute is at a right angle 90 degree okay 90 angle with the remaining two comma okay and if in this position index finger is made point in the direction of magnetic flux comma thumb in the direction of the relative motion of the conductor with respect to flux, then the outstretched middle finger gives the direction of बड़ रूल टा बुझीगले छोट हो तुम तुम निज भाषा
जो रिप्रेजेंट करि परिबो लिखि परिबो हला किंतु मते तो पूरा लिखियो पड़िबो ना समस्त पाई okay gives the direction okay just a minute with respect to flux then outside middle finger gives the direction of EMF okay direction of EMF that is your electromagnetic force okay EMF induced in that conductor or in the conductor this much only okay so आउ थरे मु देखै दउची समस्त लिखि दियो एटा होची इंपोर्टेंट जिंसटा बाबा लिखिवा दरकार लिखि दियो समस्त लिखि दियो आगे एति लिखि सारा परे अनमुटी हेची मते कहबो समस्त हां सर हम लिखि देलु बोले तापर मु ब्रीफली एक्सप्लेन कर देबी हला कोन कोन अछि ता भितरे हला लिखि दियो आगे इंपोर्टेंट जिंस सेइत में कोची लिखिवा पई लिखि दियो ओहो आ भीतर पसी से आते से Sir, completed. all of you Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माँ बिलासिनी किसान तमे कहीं किसी रेस्पॉन्स दो ना आज्ञा सर लिखि सर लिखुच ना नहीं लिखुछि रेस्पॉन्स सर। दियो आ तमे बुझुचो कि न बुझुचो सेटा केमि जानिबी आ समस्त को ना तो डाकुची हां संदेश आज्ञा लिखलो सर। ना नहीं हाँ सर कंप्लीट ओके शिवाजी लिख लो Yes, sir. ओके गुड मुन्ना महाराणा लिख लो तो ओके ठीक अछि मुन्ना से कहीं Yes, sir. रेस्पॉन्स दूना ओके Yes, sir. ठीक अछि बढ़िया ओके ठीक अछि सो राइट हैंड थंब रूल देखो मुझे फिगर कर दूची गोटे मुझे पढ़ी दिए तापर जाई बुझी परियो बोल से इट स्टेट्स दैट इफ थ्री फिंगर ऑफ ए राइट हैंड नेमली योर थंब जोटा होची बुढ़ा आंगुली जोटा तुम कहजो बुढ़ा आंगुली हला थंब एंड इंडेक्स फिंगर होची बुढ़ा आंगुली पाखटा इंडेक्स फिंगर एंड योर मिडिल फिंगर दैट इज होची कोडा 1 2 3 3 नंबर फिंगर हला मु सेटा करि देबी फिगर कर दे देखे देबे हला मिडिल फिंगर एंड आर आउटस्ट्रेचेड so that every one of them is at right angle with the remaining two ता माने कोन तमरो एमिति ताकू तमे माने रिप्रेजेंट करो जे माने जो तम राइट हैंड को कि तमरो थंब सहित तमरो इंडेक्स फिंगर 90 एंगल हबो और इंडेक्स फिंगर सहित तमर जो मिडिल फिंगर राइट एंगल हबो किंतु थंब सहित मिडिल फिंगर राइट एंगल हेला हबो नॉन लाइन हेला किंतु रिमेनिंग टू माने जे कोन से दीटा भीतर जा हेले भी तमर 90 एंगल होउथबो एटा होची कथा हेला जदि भी कहबो मु तुमको एपटे नले जो कैमरा ऑन करी देखे दे पारि किछ असुविधा नै जदि तुम बुझी न पारिबो किछ प्रॉब्लम होबो देन मते कहबो मु मो निज हाथ न तुमको जो देखिया पे राजी अछि किछ असुविधा नै मु कतो फिगर करिबी हेला फिगर करिबी जदि फिगर न बुझी पारलो ताले मते कहबो मु निज हाथ देखि दी हेला किछ असुविधा ओके सो हां तापर होची कोन एंड if in this position say position ne your index finger माने होची 2 नंबर अंगुली okay 2 number finger okay index finger is made the point in the direction of the magnetic flux से जदि magnetic flux direction को represent करला ताले thumb in the direction of the relative motion of the conductor with respect to the flux से जदि motion को represent करला किए thumb
ओके कंडक्टर मोशन को रिप्रेजेंट कला देन द आउटस्ट्रेचड मिडल फिंगर मान तुम 3 नंबर फिंगर टा gives the direction of your EMF induced in that conductor or in the conductor okay so फिगर कले तुम के बेटरली बुझी पारिबो ओके मुटे फिगर टा कर दउची रुआ के तापर जाई बुझी पारिबो तुम और तुम मानु मु जानी टिके डाउट होउतो हला देखो हाथ टा देखि करियो पड़ियो ना सेमि को हेइ दिउ सेमि हेइ पारिबो आहा just a minute हला ओके मुझे भाला ये टाइप को रोइबो एमती हला तो दीटा रोइबो हला रोइला just a minute এটা টিকে রো आहा और सब फिगर रखिले भलो हबो तुम देखिया पई नले एते प्रॉब्लम होउची हला सो एटा होची तमरो थंब हला जेती पारि जी बाबा करिची पैड रे करी होनी एक्चुअली फिगर हला ठीक से हला एटा होची दिस इज योर थंब हला दिस इज योर थंब ओके TH MB हला थंब एंड दिस इज योर कोन एटा होची तमर इंडेक्स फिंगर हला एटा होची तमर इंडेक्स फिंगर ओके इंडेक्स फिंगर ओके अब एटा होची तमरो कोन मिडिल फिंगर ओके मिडिल फिंगर ओके सो सी कोन कहला कि देखो बाबा मु एमिति रखी छी मते कुह मोर एटा 90 एंगल होची ना नहीं थंब आउ इंडेक्स फिंगर भीतर 90 एंगल होची ना नहीं यस और नो अरे यस और नो ओके तापर देखो इंडेक्स फिंगर सहित मिडिल फिंगर भी 90 एंगल हबो जेतु मुडे प्रोजेक्शन जो ओरिएंटेड रे देखै छी तुम माने जो जानि पानो थो किंतु तमे तम निज हाथ को देखो निजे देखो जानि परिबो निज हाथ को सेमित रखो जानि परिबो अदरवाइज तुम गोटे काम करो बेटर मजा मिलिबो एटी वीडियो देखि दियो बेटर मजा मिलिबो एटी रुओ जस्ट ए मिनिट देखो 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 मु एटी कैमरा ऑन करछि देखो देखो दिस इज योर राइट हैंड दिस इज योर राइट हैंड देखो बुझी परिबो आराम से देखो दिस इज योर राइट हैंड ओके राइट हैंड हला तमर एटा होची थंब ओके थंब कोन इंडिकेट करूची को मते थंब कोन इंडिकेट करूची को मते मोशन मोशन रिलेटिव मोशन ऑफ द कंडक्टर तापरे तमर एटा होची कोन इंडेक्स फिंगर कोन होची ना फ्लक्स फ्लक्स जोटा नॉर्थ थ्रू साउथ को सबले फ्लो हुए दिस इज योर फ्लक्स और एटा कोन तमर एटा कोन सब आंगुली मुली बेदले एटा कोन एटा होची तमर मिडिल फिंगर जोटा के करंट रो डायरेक्शन को देखिबो मेन ईएमएफ माने इंड्यूस्ड ईएमएफ रो डायरेक्शन को देखिबो आ बाबा करंट रो डायरेक्शन जा वोल्टेज जो डायरेक्शन भी सेया रहबो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्शन भी सेया रहबो यस और नो को मते बुझियला ना बुझियलानी यस और नो yes or no is that clear or not देखो ना एट देखो this is my thumb is the perpendicular to or 90 angle to your index finger yes or no and index finger also 90 angle to your middle finger yes or no is that clear or not please type in the chat box or unmute yourself and tell me yes or no is it clear to you guys yes or no ओके एटा होची मेन दिनसो कना एटा बुझिले आगु को बुझी परिबो सब दिनसो काइना आगु को चारटा पांचटा केस मु कहिबी
ହେଲା मैग्नीट्यूड बाहर करिवार सेठी टे खतरा जिंस अछि नले किछि बुझी परिबन मुंडरो सब पळेबो पुनी असुविधा आइ जीवो ହେଲା so mindfully listen okay so आउ थरे मु कहि दउची एठी okay so here your index finger represent the direction of the magnetic flux outstretches thumb determine the direction of relative motion between your conductor and flux. Then the outstretched middle finger will give you the direction of EMF. Okay, direction of EMF or the direction of current. Okay, so एठी हमें आउ भी गोटे इजी वे रे एटा को हमें मन रखि परिबा फादर मदर चाइल्ड. फादर मदर चाइल्ड केमिति मन रखि परिबा फादर मदर चाइल्ड केमिति हमें मन रखि परिबा जानिछो फादर मदर चाइल्ड हमें केमिति मन रखि परिबा जानिछो कि जानिनो को मते या कहबी को जानिछो ना जानिनो को न कहबा नले कोन अछि कि असुविधा जानिनो ना जानिछो कहि देबी ओके ठीक अछि ओके ठीक अछि ओके 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 थंब तमर कोन रिप्रेजेंट करछि मते कहलो थंब बुढ़ा आंगुली कोन रिप्रेजेंट करछि मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन हाँ मोशन ऑफ द कंडक्टर रिलेटिव मोशन ऑफ द कंडक्टर ओके रिलेटिव मोशन ऑफ द कंडक्टर रो हला सो रिलेटिव मोशन ऑफ द कंडक्टर रो बेटा इटे कार बात जान सकबनी relative motion of the conductor motion of conductor okay आउ एटा कोन इंडेक्स फिंगर कोन करछि इंडेक्स फिंगर कोन करछि को मते डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स खाली शॉर्टकट लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स आउ मिडिल फिंगर कोन करछि करंट डायरेक्शन ना नहीं कि बाय ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्शन ये सन्नो सो दिस इज योर फादर this is your mother and this is your child सरला सरीवाला फादर की है फ्लक्स फादर होची फ्लक्स हैला देखो मु तुमको आउरी भल भाव बुझे दूची सेकंड नंबर फिंगर जो सेकंड नंबर फिंगर ता होची कोन फादर हैला फादर होची फ्लक्स आउ तार छोटो होची बापा टू मां टिके उच्चतार छोटो थिबे निहाती ओके तो से होची के the motion of conductor तापर तमे जानिछो बापा मां जेमि चांदो पुओ किंतु डेंगा हबो ये सन्नो तो पुओ ला की करंट सल्ला को एमिति मन रखो कि तमो इच्छा जो पड़ते मन रखो हैला तमो इच्छा सेटा मो इच्छा बुझेला इज दैट क्लियर yes sir is that clear or not simple दिन सो क्लियर Yes, ना sir. ओके ठीक अछि ओके ताले आगु जीवा पुनी ना बहुत दिन सो बहुत सारा जो दिन सो रोइला सो द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड मींस if that end I am connecting if that end this is the end the direction of your EMF induced this is the end okay if that end I am connecting a load then what will be the direction of current what will be the direction of your current okay so basically if the armature winding are connected to load what is the direction of current flowing through that load nothing but a direction of your EMF induced so let's discuss briefly what is the direction of your current एठी तमनकर मैग्नेटिक चैप्टर रो जो पढैथिली डॉट क्रॉस जो दिनसटा मु पढैथिली मन अछि ना नै डॉट और क्रॉस तार मन नै बोधे सरी गला एठी मार पाई गला सब मन तो डॉट कोन क्रॉस कोन कपुल सर्किट हां पप्पू सर मु ए जस्ट यूट्यूब रो डेमो क्लास रे जो पढैछि तमन मन अछि ना नै को मते अरे अच्छी ना नहीं मते कुओ अरे बाबा एंट्री कले करंटा जोटी एंट्री करछि बा स्क्रूटा एंट्री करा होछि सेठी क्रॉस नउचो जोटी आउटवर्ड द पेपर होछि सेठी डॉट नउचो एती मन अछि ना नहीं यस हां सर यस सर हां एटा दरकार हो एटा बहुत बड़ परिमाण में दरकार हो हला सो लेट अस डिस्कस ब्रीफली सो 2 मिनिट खंदर तमे
ओके सो देखो ओके कौन कहूली बाबा माने तमर जो डायरेक्शन देखिबा ना ईएमएफ रो डायरेक्शन देखिबा ना ये हां ईएमएफ रो डायरेक्शन देखिबा ना ये सुन लो यस सर अरे बाबा ये सुन लो तुम इंड्यूस्ड ईएमएफ रो डायरेक्शन देखिबा ये सुन लो Yes, sir. all Hindi students of CB Raman Polytechnic have you understood all the concept yes or no अरे समझ पा रहे हो कि नहीं बोलो अरे yes or no बोलो all of you getting or not whatever I will teach you tell me लोकेश नहीं बोधे आज से सब कटि गले बोधे सब ना कौन ना प्रश्न तो नहीं हाँ कौन पाठ पढ़े ओके ठीक अच्छे तुम्हें पढ़ो ओके सो हियर व्हाट वी कैन डू here we have some cases okay so where I can determine the direction of your EMF electromotive force okay or EMF induced okay so here I am having magnetic poles okay magnetic poles formed because of the electromagnetic that is your north pole and south pole okay so please draw the diagram first suppose this is my S pole that is south pole and this is my north pole okay mindfully एटा को बुझीबा को चेष्टा करो एटा होची इंपोर्टेंट जिंस हैला बहुत इंपोर्टेंट एटा न बुझी पाले किछि सेगुडा परगुडा कि जो कि माने आगु जा आछो किछि बुझी परिबनी ए जिंस गुडा हैला so here I am having two poles your north pole and south pole so now we know that all of you know the magnetic flux always complete the path from north to south yes or no please tell me Yes, sir. yes sir yes so your pole will be like this your flux will be like this okay सेडा दरकार नहीं एते दरकार करिया एटू डायरेक्ट टाणी दूच मुझे टाणला ना बोका होबो ना सेतने भलो टाणियो भाबते गो भलो टाणिया किछ असुविधा नहीं ऑलवेज तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स तक कहाँ टू कहाँ को फ्लो हुए नॉर्थ टू साउथ को फ्लो हुए ये सुन लो जान तो ना जानो yes sir Yes, sir. ओके गुड जान तो बहुत बढ़िया एटा कर दियो एटा जो कॉपी कर दबा हला आउ बेसी फिगर करबनी हला सो ऑलवेज फ्लोइंग नॉर्थ टू साउथ सो दिस इज द डायरेक्शन of your magnetic flux okay so here okay north pole to south pole wala and it is in a circular form only all of you know this is in a circular form yes or no the magnetic flux yes or no होना नहीं अरे yes or no Yes, sir. So the magnetic flux direction here will be form of north to south pole or north pole to south pole. So here a conductor is placed like this. A conductor is placed like this. Here a conductor is placed like this. Okay. Here one conductor is placed like this.
Okay. Okay. The conductor and the conductor. This is the conductor. Okay. This is the conductor, and the conductor is moving to this flux in this direction. Okay, in this direction. So this is the direction of your relative motion of the conductor. So please write down here. This is the relative motion. The relative motion of conductor. ମୁଁ conductor କୁ shortcut ରେ ଲେଖିଛି, ତମେ ମାନେ long cut ରେ ଲେଖ ହେଲା. So now what will be the direction of EMF induced, which is nothing but a current? If I close that winding through the load, so let us apply the Fleming's right hand rule over here. Okay, so as we discussed earlier, this will be the direction of your magnetic flux. Just a minute, मैं एक figure करूँची, better होगा तुम मन को जानिबा पाए. Just a minute खाली, just a minute. Fleming right hand rule जदि पकेवा एठी, ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଟିକେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ରୁହ. ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଗର କରିଦଉଛି, ତମମାନେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବ ଭଲସେ ମତେ ଲାଗୁଛି. ବେଶୀ ବଡ କହିଲେ ହେଇଯିବ. ଟିକେ ବାବା ରୁହ, କଣ କରିବା, ସେ ଫିଗର ଗୁଡା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟେନସନ. ଆରେ okay, this is my right hand. Okay, तुम जानिଛ एटी रिलेटिव मोशन तो तुमको जଣା पड़ी जाइथिबो ऑलरेडी. कहना तुम रिलेटिव मोशन होची ए डायरेक्शन में, यस और नो. जो रिलेटिव मोशन तमर की थंब ना नहीं, यस और नो. हां, थंब तमरो रिलेटिव मोशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करती ना नहीं, यस और नो. यस सर. यस सर. ओके, एंड तुम मैग्नेटिक फ्लक्स को के रिप्रेजेंट करती, तोर इंडेक्स फिंगर हो ना नहीं. ओके, तुम करेंट को क्या रिप्रेजेंट कर, देख करेंट तुम जो मिडिल फिंगर, जो मिडिल फिंगर टा कुआर अच्छी ऊपर को अच्छी, हाँ ना नहीं. जब जानी पारन देख कैमेरा ऑन कर, देख ये देख जानी पार, मु कैमेरा ऑन कर, देख देख जानी पार, आराम से बुझी पार, कहीं बुझी पार, सब बुझी पार. देख दिस इज द डायरेक्शन. मत भी देखा बाबा, टे जस्ट मिनिट. हाँ एटा ओके, मो हाथ देखा ना ना मु टच पकई पुणी कह, किसी असुविधा नहीं, पकई देवा कौन अच्छी. तो सब कराया कहीं करानी, यहाँ कौन बड़ कथा. देख देखा तो ना ट्रस टा भल देखा बोधे मत लगुच. ट्रस टा बेसी ये कर दौर, जस्ट मुझे ट्रस टा लिभे दूसरी. देख दिस इज राइट हैंड. This is the direction of your magnetic flux. Yes or no? This is the direction, north pole to south pole. Yes, देखा होगी ना नहीं? Yes or no? Yes sir, देखा जाऊँ. अरे बाबा देखा जाऊँगी ना, देखा जाऊँगी. Okay, this is the direction of your magnetic flux. This is the direction for your relative motion of the conductor. And what is the direction of your current? This one? तुम आड़ू जाऊँगी ना नहीं? कैमरा आड़ू जाऊँगी ना नहीं? जो करंट डायरेक्शन था, यस और नो? यस सर. करंट डायरेक्शन ता कैमरा आड़ू जाउची ना नहीं, देखो मते तुम आड़ू जाउची ना नहीं. यस सर. माने बाहर उची ना नहीं, यस और नो? बाहर उची ना नहीं, माने ता भीतर टाणी होची ना नहीं, माने कोन स्क्रू टा खोला होची ना भिड़ा होची, के एटी कहि परिबो? स्क्रू रूल के कहि परिबो? को डॉट आउट क्रॉस एटी कोन हबो? डॉट हबो ना क्रॉस हबो?
किए कहि परिबो एठी कोन हबो एठी करेंट डॉट हबो ना क्रॉस हबो किए कहि परिबो स्क्रूटा एठी खोला जाउची ना डॉट हबो सर गुड एक्सीलेंट ओके दिस इज द स्पिरिट of the topper student only okay एटा होची स्पिरिट ऑफ योर टॉपर स्टूडेंट ओनली ओके आउ को माने कहि परिबे नला जो माने बुझी नथिबे ना से किछि कहि परिबे नला से खाली संडू भागवत बुझेबे हला किछि कहि परिबे मु जानि छि बाटी की हला बुझि परलो तेनु करी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट सो एठी हमें कोन रिप्रेजेंट करबा ना डॉट रिप्रेजेंट करबा करंट को यस और नो अरे yes or no यस सर अगेन सर देखा तो रिप्रेजेंट कर ली देखा तो डॉट टा यस सर अरे बाबा डॉट टा देखा होची ना नहीं ओके सो ब्रीफली एक्सप्लेन करती इंग्लिश रे बुझी दियो ओके ब्रीफली एक्सप्लेन करती हला बुझी नियो सो हियर द कंडक्टर इज प्लेस्ड like this only so the conductor is moving to this flux in this direction okay so this is the direction of a relative motion of a conductor so what will happen here we will apply the Fleming right hand rule over here so your अरे टिके रोइले बाबा माने टिके दस मना करते ना सोची okay so your magnetic flux okay magnetic flux को क्या दिखेला ना तो index finger you know okay and your outstretched middle finger काको डायरेक्शन दिला ना current को yes or no so the current or it is coming out of the paper yes or no अरे करंट टा पेपर रो आउट होची ना इन होची यस सर आउट होची ना यस सर आउट होची okay so your current is coming out of the paper or out of the board or out of the plane so that we represent by a dot only so please write down here this is the case number 1 okay this is your case number 1 we will write it this is your case number 1 please write down the case number 1 over here case number 1 the current लिखि दियो हला current coming out current बाहर को हला so से टाइम में एडिट कौन ले बाबा ठीक है जस्ट Is it audible or not? Is it audible? यस सर यस सर यस सर Okay. So in the first case, what we are observing? The current is coming out of the paper or out of the plane or out of the wall.
Then after we are considering the second case. Okay. So here we will represent the first case where I determine the direction of EMF induced or a current that is nothing but current coming out. So let's see the second case. Okay. So please draw the second case. ମୁଁ ଏଟାକୁ କପି କରିଦଉଛି ଏଠି ହେଲା ତମେ ଡ୍ର କର ମୁଁ ଏଠି କିନ୍ତୁ କପି କରିଦେବି ହେଲା ତମେ ଡ୍ର ଦିଅ ହେଲା ମୁଁ କପି ମାରି ଦଉଛି ମୋ ଡ୍ର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ଡ୍ର କର ତମେ ପେପରରେ କର ହେଲା ରଫ୍ ଭଳିଆ ଡ୍ର କରିଦେଇଥା ହେଲା ଡ୍ର କରିଦବ ଡ୍ର କରିଦେଲେ ତମ ସୁବିଧା ଓକେ ଓକେ अरे just a minute ओके हे गला मोर ड्रॉ हे गला तमे ड्रॉ करो हैला तमको ड्रॉ करिया दरकार रिक्वायर अछि तम मान करो ओके अरे ओके सो हियर आई एम कीपिंग द फ्लक्स direction saying that means your pole and your north pole and the conductor is placed inside in this way okay and this will be the your motion of the conductor yes. This will be direction of your relative motion of the conductor yes or no yes so let's apply the Fleming's right hand rule over here so it is the Fleming's right hand apply करिवा ताले केमिति हबो त फिगर ता मु भी एडी कहि दोउची एमिति हबो देखो ହେଲା एमती हम मुझे तुम देखा दूसरी बेटर हम मुझे तुम से दूसरी बेटर हम है सो प्लीज सी हियर see here is it visible or not Yes sir visible अरे okay okay ठीक है okay so here my middle finger the middle finger this is the direction of your index finger okay finger represents direction of flux and this is okay and my middle finger is pointing towards the अरे yes or no এটা এসি কোশ্চেন না Fleming's right सर वॉइस कोड কোন হলা वॉइस कोड ओके जस्ट अ मिनट वेट करो देखो this is the direction of your magnetic flux is it audible yes sir yes is it audible yes sir this is the direction of your magnetic flux in my index finger okay and relative motion of the conductor is my thumb representing what is the direction of your current this is pointing towards the paper or towards my laptop or towards my desktop or towards my wall or towards my paper or towards my plane yes or no देखो ना से जे टच करछि ना नहीं भितर पछि ना नहीं एंट्री करूछि ना नहीं तमे स्क्रू भिड़ा होछि ना नहीं तनो current is going inside the inside plane of
inside the wall and this is determined by the cross na dot. क्रॉस होगा सर। Yes, good, excellent. Good, बहुत बढ़िया. Okay, so तमे रिप्रेजेंट करवा हां क्रॉस रे रिप्रेजेंट करवा. So हाँ ये कर देली टिके रो एटा हम ग्रीन इसरे करतला ये जो पिंक करतले ना. Okay, thus we will determine this is by the cross. Okay, let's say another two cases. Okay, so where I am changing the poles. Okay, एठी हमें south north नहीं जे सेठी हमें north south नवा देखिबा कोन होउछ. What will happen there? Okay, this is a checking proposal. हला एटा तुम परीक्षा लिखले भी बहुत भलो माने फुल पाइबो हला किंतु बुझि दरकार एटा को दरकार हम एटी पढे दउची तमे बीटेक रे भी सेती पढिबा दरकार नै. बीटेक कोन तो तमर हेई गला मन रखिताओ हला. सो एटी हमें कोन लेरिबा एटा में कोन लिखि परिबा सेकंड नंबर केस रे लिखि परिबा कि करंट कोन लिखि परिबा करंट गोइंग इन. ओके, प्लीज राइट डाउन दिस वन. करंट गोइंग इन गोइंग इन और गोइंग आउट. ओके, तो जारे गोइंग इन लिखि देले भी हला एति की फिगर जे करिवो हला तू लेक्चर तम खाता देखुतो ना सी सालुट मारिबो खाता को हला को ना बुझी हला खाली बेसी नहीं तुमको एति फंड होची डिप्लोमा प्रपोज है तमे एति की फिगर कर दबो हला एति फिगर कर दबो हला तापरे पाठ 30% लिखो हला 30% पाठ टिके फास्ट लिख दबो तापर बसी खाली से डिसीजन ऊपर गोलेबो देखिबा फुल देबे मार्क काई ना तो फिगर करतो सेति की आ ए फिगर मु तुमको एटी गारंटी कहूची तो जदि तुम ए फिगर तुम रे पढ़ाई गला 99% मु तुमको गारंटी दूची जदि ए फिगर करी तुम जो कॉलेज तुम लेक्चर माने पढ़ाई देले मु पाठ पढ़ेबा छाड़ मु पढ़ाई मन को YouTube रे फ्री क्लासेस देबी हला पेड क्लासेस मु एटी तुम डाकी पेड क्लासेस कहबी तुम पैसा तुम देबी हला मु कहूची ग्यारंटी दे कहूची तुम 99% ग्यारंटी दे कहूची सेमिति 1% के थिबे जदि पढोते जो भल जो मैंने पाठ जानी एक्जाक्टली वे रे जानते बहुत बढ़िया जानी से है ताबन नुहे जे समस्ते माने खराब बोली समस्ते बहुत भल किंतु से माने पढ़ू ना एक्चुअली है सब लेक्चर बहुत भल है तुम भावनी जे तुम मैंने गवर्नमेंट हूँ कि प्राइवेट हूँ से पाठ जाने बहुत बढ़िया पाठ जानते है मोठ बहुत माने प्रवीण से माने बहुत बढ़िया मोठ भी बहुत मु बाबा किसी नुहे है माने पढ़े पढ़ी से माने बहुत माने बड़ मोठू है बहुत भी पाठ पढ़ी किंतु पढ़ेबार इच्छा नहीं पढ़ू ना पैसा तो आसी मास पढ़ू कहीं कौन हो गला से करदबा गोले छाड़दबा बस सरला पिला पढ़ले भल न पढ़ले भल है या हूँ मोटी कि जड़े जड़े लेक्चर अच्छा बढ़िया पढ़ाती है मुझे जड़े पढ़ी मुझे शिखी तुम मानू से शिखु सत कथा मो लेक्चर मान से पढ़ी मुझे तुम मान रिप्रेजेंट कर तो वी विल गो नेक्स्ट केस 11टा बगला है ये देख 1.5 घंटा पड़ेगा 3 घंटा ऑलरेडी कंप्लीट हो किंतु तुम एटा सरी नथिबो वर्कफुल सर नथिबो बहुत सारा प्लान वर्किंग प्रिंसिपल पाई के ठीक जल्दी जीवा लेट हो सो ओके so let's take another case where I am changing the pose okay so এটা ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଏଇଟା କପି କରି ଦେଇକି ଏଇଟା ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ ବେଟର ହବ काम करवा एटा को रोटेट करे दवा बेटर हबो भूली गला बस डायरेक्ट उठी गला हैला तो तमे करिनियो हैला उपटा को जीवो तळटा हे जीवो
साउथ पोल है एटा गला नॉर्थ एटा गला साउथ ओके एटा हमर कंडक्टर प्लेस्ड है ओके सो I am changing the poles now this becomes north pole and this becomes south okay so the flux is flowing like this north to south okay and the conductor is the conductor is placed over here okay whose relative motion will be like this whose relative motion will be like this अरे अरे will be like this this is the relative motion of conductor okay okay so here the direction of current will be कौन हम किए कहि परिबो डायरेक्शन ऑफ करंट कौन हम किए एटी अप्लाई करिक मते कुह मु आ एटा कहबी डायरेक्शन ऑफ करंट कौन हम इनवर्ड हम ना आउटवर्ड हम मते कुह मते त माने कहि सारिबो तापरे मु कहबी मु कहबी कौन हम मते कुह प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट योरसेल्फ एंड जो कुह Coming out. केस एटा कौन हम कमिंग आउट मुंडो काम करनी की कमिंग इन से काहे कमिंग इन हो केमी चला कमिंग इन केमी चला तम मुंडो फुण काम करनी है मु एते पढ़ेली ता फायदा कोन हां इनसाइड हो ओके 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 मु कहूची देखो देखो एटा एक्चुअली तुमको हाथ हो नले हाथटा उल्टा रखले बुझी पारि देखो एते रखिबो हाथटा उल्टिया रहइबो हला this is the direction of your magnetic flux yes or no north south yes or no this is the direction of your magnetic flux and this is the direction of relative motion of the conductor what direction of your current inside होची ना outside होची अरे टा बाबा inside होची ना outside होची देख रहे होते कौन होते going in or going out sorry going in or coming out sir going in huh yes this is going in बुझी पाइल को मत so all of you please type in the chat box or unmute yourself and tell me huh बुझी पाला तो sir so current going in हाँ कौन कुआ नहीं तो करंट गोइंग इन माने कौन क्रॉस ना डॉट sir अरे बाबा गोइंग माने कौन क्रॉस ना डॉट यस cross sir माने क्रॉस सो ओके गुड सो एबे कौन करबा पुणी नेक्स्ट केस ता so here the current will be towards the paper so finally if I change the relative motion of a conductor or of your conductor how it will be look like here obviously current will कौन होची ना कौन होची towards paper or entering the plane okay so again we will draw the last case okay we will draw the last case so please draw the last case over here एट ड्रॉ कर दो एट ड्रॉ कर दो बस दरकार नहीं आउ किछि एटा वटे कर देले रोटेट कर देले सल्ला बस जस्ट ए मिनिट
जस्ट ए मिनट कल टिके चेंज कर दिया टाउ चेंज न कले हबनी लिबुनी कहीं दिस इज n दिस इज s n to s फ्लो हला तो एबे एटी तमरो रिलेटिव हां हां एटी तमरो रिलेटिव मोशन हला relative motion of a conductor. So this is your fourth number case. Okay. So देखो एटी जब मु फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करे ताले मोर करंट इनवर्ड हबो ना आउटवर्ड हबो ये कोई परिबो जल्दी को गोटे सेकंड रे एटा समय देबिन तुम मन को एते बस आउट जदी कंडक्शन करी मते कुह एटा होची मोर डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फ्लक्स of your magnetic flux, and this is the direction of your relative motion of the conductor. And what is the direction of your current? This is outward. Coming out. This is coming out. This is coming out. कहीं obviously this is coming out. कहीं ना तम आड़ को आछि देखो से भीतर जाउनी तम आड़ आछि ना so this is coming out. Okay, so this is out. So please write down over here the fourth number is okay current coming out current coming out okay so this is the phenomena we have to determine the direction of EMF induced in the DC generator okay so direction of induced EMF just okay direction of induced EMF can be reversed if I change the relative motion of a conductor or direction of flux. Just as here I am keeping the flux okay so for your example for your case number 1 and 2 okay for your case number 1 just a minute color change करती better होगा तो मनु बुझिया पाई for your case number 1 what will happen case number 1 and case number 2 okay direction of flux is same देखो एटी फुल्ली एटी बुझ चेष्टा करो बुझो मु जोटा कहूची बुझो देखो एटी फ्लक्स सेम अछि ना नहीं मते कुह फ्लक्स सेम अछि ना नहीं yes or no flux is same yes or no please unmute yourself and tell me yes or no unmute kuo Yes sir. flux टा सेम अछि ना नॉर्थ टू साउथ ना नहीं पूरा माने flux टा अपवर्ड अछि ना नहीं yes or no Yes sir. Again sir. Yes sir. yes sir okay but I change the relative motion of a conductor but I change the relative motion of a conductor and hence I am getting the EMF induced of different direction whereas in the 3 and 4 cases what I have changed the flux direction only on this case I am on the flux direction in this state okay or in these cases so it is north pole and this is south pole earlier it was south pole and this is north pole and what I will get here this is cross and this is dot okay this is cross and this is dot okay this cross and this is dot so the direction of flux is same direction of flux is same for these two cases that is your case number 1 and case number 2 okay change in the direction of motion will give you a reverse EMF and whereas here if I change the pole the direction of flux will be reversed yes or no yes sir अरे बाबा देखो ना 3 नंबर केस रे और 4 नंबर केस रे वो पोल टा चेंज कर देली जो रिवर्स कर देली फ्लक्स टा रिवर्स हो गेला नी की अरे हो ना नहीं Again sir. Yes sir. अरे बुझी पारछो ना टोटल ना मुंडरे किछि पसुनी मुंडरे पसुनी ना
यस सर बुझी मुंडर पसुनी कि मते कुह नले कहि हाँ मुंडर पसुनी मते कुह ओडिया कहि कने एटा होची इंपोर्टेंट जिंस तुमको एटा फ्यूचर रे दरकार पूरा हैला तो बीटेक कले पूरा मोस्टली दरकार बीटेक जे पढिबो ताको दरकार एटा कंपलसरी ओके सो you was just considered for let us say your एक number case and your तीन नंबर case ओके मुटिके आपके छोट कर दिया छोट कर ले आटे तीन देखा जीवो और चारटा को देखा जीवो नलटे विजिबल होआ को तुम प्रॉब्लम होतो हला मते छोट कर देले एट टाइम यदि सब देखिबो तुम बुझिए भाई एटा ना समझ देखते इज विजिबल नहीं चारटा के विजिबल होची पूरा एट टाइम ना विजिबल हेनी हो जे सर चारटा केस देखते ना नहीं ओके so if you just obey consently okay so for let us say your case number 1 case 3 okay motion is remaining same देखो motion भी same ଅଛି motion का same ଅଛି ना सुनो motion is same flux is changing only सुनो तो केस ले flux टा upward ଅଛି 2 नंबर केस downward ଅଛି yes or no now unmute yourself and tell me in one copy yes sir besi dorkar na jone okay yes sir so in your one number case and 2 number case third case motion is remaining same okay above two case motion is remaining same but the flux is changing the polarity because the flux is changing the polarity because of that I'm getting over here the dot over here the dot and over here the cross here we will get the cross here we will get the dot economic case रा dot पाइले number case रा cross पाइले बस okay same is the case for these two your case number 2 and case number 4 okay you want to reverse the direction of your EMF induced conductor you either change electric motion of a conductor or the direction of flux if you change both okay then you will not get any change the direction of EMF induced okay so it is very important and that is given by Fleming's right hand rule. Let's check another part that is your magnitude of your EMF induced. एटा से तार डायरेक्शन देख देले एबे देखला तार मैग्नीट्यूड ता कोन हबो आज देखिबा नेक्स्ट क्लास तम इच्छा मु किछि कहबिनी तम यदि कह पढाया पे मु पढाई तम इच्छा को कहना एटा 4 घंटा लेक्चर बाबा हैला एटा बड़ो लेक्चर हैला सर नेक्स्ट तेणु करी भावना ये हां काली पढिबा ना आज पढिया सर काली पढिया सर काली पढिया सर डाटा सर सर लानी पूरा डाटा सरी गलानी नाही डाटा सरी गलानी बे बाबू मु 6 जीबी रिक्वायर करती जाचो 6 जीबी पकी तम पाइका हमर राउटी हमर नेटवर्क सब कटि जाईची होल कॉलेज रो नेट आपुनी टोटली ला वाईफाई चालूनी राउरकेला कोन गोटे प्रॉब्लम हेची सेठी माने वायर सब डिस्ट्रैक्ट हे जाईची माने छेंडी छाडी जाईची ता कोन लेवल क्रॉसिंग होची काटी देचन सब तो होल कॉलेज रे नेट नाही हैला से जाले भी 2-3 दिन लागिबो तो से में मु 6 जीबी रिचार्ज करी आ कोन करिबा ओके तो कोन करला को आज पढ़िया ना कोन करिया ना पढ़े देउची कोन पढ़े दबा काहे के हाँ पढ़े दबा जीव से काहे गोटे पुणी मते टेंशन दउछ पुणी तुमको गोटे ये कर मैग्नीट्यूड पे का पुणी गोटे आधा क्लास ले हां अब माने हो सोई पड़लनी बोले सब खाई न किछि आ कोन करिया those who have interest to join our paid batches class कहीं तुम मान जाच कि यूट्यूब रे आउ क्लास होनी तुम गूगल मीट रे क्लास होची
So those who have to join for your paid batches only, okay, so for the paid batches, okay, please message on this WhatsApp number. The number is 9937055084, ओके। यहाँ हूँ आमर आडमिनिस्ट्रेशन व्हाट्सएप नंबर, तुम यही नंबर को जाकि व्हाट्सएप रे मेसेज करें, ताल जाकि तुम मैंने पेड बैचेस पढ़ी पार। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे गूगल फॉर्म रो लिंक अच्छी, से जाकि इमिडिएटली फिलअप कर। कहीं मुझे इमिडिएटली कहली ना, तुम मानकर फॉर योर काइंड इनफॉरमेशन जो मैंने पेड बैचेस क्लास नौ, बाकी जो क्लास होची से ऑलरेडी से डीसी जनरेटर टॉपिक सरिलानी, ओके। जदि तुम मैंने जॉइन कर आउ थे तुमको डीसी जनरेटरटा पढ़ा जीवो, ओके। सो एतिकी थिला आजिकार टॉपिक, आजिकार क्लास, ओके। सो मते विदाय दियो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय महाकाल। समस्त भलर थाओ, सुस्थ थाओ आ भलरे पाठ पढ़ु।